नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है हर्ष वर्मा। और भाई एज एन एक्टर आपने कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया है अभी? यस यस ऑफ कोर्स। मैं जब अमेरिका में भी था तो मैं फिल्म स्कूल गया था, मैं थिएटर स्कूल गया था। पर यहाँ पर भी मैंने थिएटर किया है काफ़ी। ऑन सेट जो फाइट कोरियोग्राफी होती है और रियल फाइट ट्रेनिंग जो होती है, या इसमें फ़र्क होता है। तो हाउ इजी इट वाज फॉर यू जब आप सेट पर गए और आपने वो कोरियोग्राफी को अडैप्ट किया? ओके, यू नो आई प्रैक्टिस सो मच, आई स्टडीड सो मच। मैं जब जैकी चैन टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, सो आई गॉट टू स्टडी मोर ऑफ द सिनेमा फाइटिंग। सिनेमा मार्शल आर्ट्स का एक प्रॉपर कोर्स होता है, यू नो, फॉर इन हॉलीवुड। और साथ ही साथ दोस्तों, हर्ष ने अपनी एक्टिंग करियर के बारे में भी बहुत कुछ शेयर किया, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। आप जैसे बात कर रहे थे भाई कि आपने उनका पूरा रूटीन अडॉप्ट कर लिया। और मुझे भी लगता है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं या जो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, उनके बेसिक छोटी छोटी चीज़ें या रूटीन बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ का एक जनरल रूटीन क्या होता है? तो जब मैं एज अ फॉरेन स्टूडेंट, जब मेरे पैर का थेरेपी चल रहा था तो तभी अलग रूटीन था। बट आफ्टर माई लेग बिकेम फाइन, उसके बाद मेरा फॉरेन ग्रुप जो बोलते फॉरेन डिसाइपल्स होम, जहाँ पे हम रह रहे थे, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग फॉरेन स्टूडेंट्स जो बाकी कंट्री से भी लोग आते हैं, तो हमारा यूजुअल रूटीन था, we used to wake up in the morning at 4:15. Training, we used to have breathing, chanting and prayers in the morning from 4:30 to 5:15. उसके बाद फिर 5:30 5:45 तक हम लोग लाइन अप करके we used to run the mountain. Then we used to run the mountain about like say 4 to 6 kilometers, go come back, and then फिर 7 o'clock breakfast हो जाता था. एंड देन ब्रेकफास्ट के बाद फिर 8:30 हमारा नेक्स्ट सेशन होता था ट्रेनिंग का. सो 8:30 to 11:30 3 hours ट्रेनिंग होती थी, जहाँ पर हमको फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, किक्स, पंचेस, जो फिस्ट फॉर्म के बारे में जो मैंने आपको बोला, वो सब उसमें होता था. देन 11:30 11:45 तक लंच टाइम हो जाता था. ईट लंच. After lunch we used to get like 1.5 2 hours to rest. Many people in the foreign disciple home used to take Chinese classes. वहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे विलेज के आसपास, जो बोलते हैं ना कि जो बेसिक चाइनीज़ और इंग्लिश बात कर सकते थे, तो सिखाते थे. तो मैंने कभी वो नहीं लिया, क्योंकि यार वो बहुत टूटी हुई टाइप ऑफ स्टडी होती है. तो मैं क्या करता था ना, I used to keep on walking around the temple and I used to just talk to people in whatever capacity I could. I used to take my phone. अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं मेरा फ़ोन उनके मुंह के सामने रख देता हूँ, तो ताकि ट्रांसलेट करके उनको समझ रहा है और वो क्या बोल रहे हैं मुझे समझ रहा है. तो मेरा एक्चुअली जो स्टडी रन, इट्स बिन अ वेरी एक्सप्लोरिंग टाइप ऑफ स्टडी एज अ फॉरेन स्टूडेंट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द टेम्पल लाइक्ड अबाउट मी, दैट दिस गाय फाउंड हिज ओन वे एंड पाथ टू स्टडी. एंड देन आफ्टर द चाइनीज़ क्लास, और मैं चाइनीज़ जो मेरा पढ़ता था, उसके बाद थोड़ा आधा घंटा नैप पे या रेस्ट लेके, देन अगेन ट्रेनिंग एट 2:30 to 5:30 अगेन ट्रेनिंग. And then rest after 5:30, dinner at 5:45 6, and then you rest. Either you can do self training or either you can rest. So this was as a foreign student. But when I became a warrior monk, routine was very little similar but very strict, because साफ सफाई, सर्विस करना, स्कॉलर. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉन्क्स, वॉरियर मॉन्क्स एंड स्कॉलर मॉन्क्स. स्कॉलर मॉन्क्स आर द सीनियर वंस. वॉरियर मॉन्क्स आर द वन हु आर मेनली एसोसिएटेड विद द कुंग फू प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग द शाओलिन कल्चर. तो हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट इसमें लाइन अप करना, जैसे मिलिट्री में, आर्मी में कैसे होते हैं, हमारा रूटीन लिटरली वैसा था. लाइन अप करो, सबके लेफ्ट राइट पैर साथ में चलने चाहिए, और फिर साफ़ सफाई, सीनियर्स को पहले सर्व करो, सर्व करने के बाद आप अपने आप को सर्व करो, खाओ, सब क्लीन करो, बोल्स, चॉपस्टिक्स, टेबल वेबल, मेस जो हमारा होता था. और हमारे ट्रेनिंग हॉल साफ़ करो, आके झाड़ू पोछा वहाँ पे मारो. हमारा जो वॉरियर मॉन्क का जो डॉर्मेट्री था, वहाँ पे साफ करो. सो आफ्टर आई बिकेम अ वॉरियर मॉन्क, आई लेफ्ट द फॉरेन डिसाइपल्स होम एंड आई मूव्ड इनसाइड the dormitories of the warrior monks. That's where all Chinese people used to live. I was the only non-Chinese who was invited to live over there. So for me it was a very big achievement that I was living with them. I was observing them, studying them, and they never treated me anything apart from one of them, because they saw that yaar, he's so easygoing, he's just adapted to us. तो डिनर के बाद हमारा ऑलमोस्ट डिनर तक हमारा सेम रूटीन होता था. एंड देन वॉरियर मॉन्क्स को मेडिसिन क्लास और मेडिटेशन क्लास भी होती थी. सो वी हैड टू डू दैट.
एंड आफ्टरनून में जो चाइनीज़ क्लास जो मैं बोल रहा था वहाँ पर हमको बुद्धिस्ट फिलोसफी क्लासेस होती थी 1 घंटे के लिए. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग एवरीथिंग प्रॉपरली थरली. So I literally did my masters in ancient Buddhist philosophy. I studied Chinese medicine, only the acupressure part of it. Got to study the meridian points, which points are connected to which organs of your body. कौन से, जैसे मैंने आपको lymphatic system के बारे में बताया, the first heart, the second heart of the body. So we got to study a lot in depth about your own self. And of course, martial arts, kung fu, the philosophy behind it, the practice behind it. And then 2017, the fourth pillar of Shaolin culture was added, called Zen archery. So we were sent out of 120 warrior monks. 40 warrior monks की trial हुई थी. So out of the 40 warrior monks, only 6 to 8 were selected to go to Guangzhou for professional archery training. So I was one of the 6 to 8 people who went to Guangzhou to train professional archery, 10 hours a day, every day for 4 months, 5 months training. And when we all studied it, we just didn't do the archery, bow and arrow. We used to have proper theory classes also about, and it used to be in Chinese. And Guangzhou, the dialect is little different when they speak Mandarin, because over there, their language is Cantonese, which has 7 tones, and Mandarin has 4 tones. तो मुझे कभी कभार डिफिकल्ट लगता था, बट everybody in China speaks Mandarin because that is the most basic simplified Mandarin, the basic language over there. तो स्टार्टेड स्टडिंग द थियरी पार्ट ऑफ तो मेरे दिमाग में यार ये बहुत सवाल आने लग गए कि मैं यार इतनी सारी चीज़ें सीख क्यों रहा हूँ, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस इन लाइफ. सो आई स्टार्टेड आस्किंग माय मास्टर, माय शिफू, लाइक आई एम स्टडिंग सो मच, इतना कर रहा हूँ, क्या है, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस, लाइक वेयर इज दिस टेकिंग मी. एक पार्ट मेरे में अंदर एक बोलते थे ना, क्यूरियोसिटी फेस कर रही थी कि ठीक है, आई बिकेम एन इंडियन, आई स्टडी दिस वेपन, दिस प्रैक्टिस, फिलोसफी, माइंड, बॉडी, आर्चरी भी. So my mind, as an Indian, as a Hindu, my mind started going towards Mahabharata, started going towards Ramayana. So it got me curious to read about the Mahabharata. It got me curious to study the Bhagavad Gita. Got me curious to know the more stories about Ramayana. And then in that practice, in that meditation, I found my purpose, what it is, and I'm fulfilling my purpose now. And yeah, that's where I am right now. आपने महाभारत पूरी पढ़ी है भाई? नहीं, ऑनेस्टली नहीं पढ़ी. पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ. तब से लेके अब तक मैंने बहुत कम पढ़ी है, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ी है. और भगवद गीता भी पढ़ रहा हूँ, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रहा हूँ जितना मेरे कैपेसिटी में. आई रीड अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, आई रीड अ लॉट ऑफ फिलोसफी एंड साइंस बुक्स. स्टीफन हॉकिंग एक्साइट्स मी. I love science because science and spirituality is the kind of life and practice that I live by. It's there in my lifestyle. So I feel they are very correlated. I don't think those two practices or studies are two different parts of poles. I think they're very correlated and complementing to each other. I love the author Eckhart Tolle. Recently I've started reading more of fiction books. So Khalid Hosseini ki The Kite Run I'm reading. उसके पहले I've read autobiography of a yogi, Paramhansa Yogananda ki, and many Eckhart Tolle books I've read, like I said, and The Art of Living in Zen. And then there was this other book that I read was the same author of Art of Living in Zen. Many people have read it. It's a Japanese book. So a lot of Kaizen का ही author है वो. Forgot the name of the book, but anyways, so very similar books of philosophy, spirituality. I'm reading a lot of Buddhism books that I read. I love reading Buddhism books. So much of practice, so much of you get to know, different perspectives of people. I'm trying to right now. What I'm doing in life, where I am, I'm trying to read more of fiction because of my profession as an actor. It requires me to be more explorative in my mind and to think of, different character situations, what can be at stake for any particular character. So I'm guided in that direction. But yeah, I just love reading in general. Get it from my mom. So transitioning from living in the foreign disciple home to a warrior monk with the almost similar kind of routine, but in a very strict way. तो डिनर टाइम भी हमारा सेम ही रहता था. फिर मैंने जैसे बोला, मेडिटेशन क्लास होती थी अराउंड 6:37, एंड देन फिलोसफी क्लासेस, and then self-practice. So we used to wind up our day by 8:30, 9, and then sleep by 9:30, and then again wake up at 4 o'clock. तो हमारा बहुत रूटीन लाइफस्टाइल था. whether it's a foreign disciples home, इतना ज़्यादा strict नहीं था, but as a warrior monk it was very strict. Like I said, it was very army. It was a very routine lifestyle from morning 4 o'clock से लेके रात को 9 बजे तक. And वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना,
प्रेयर करना, चैंटिंग करना, तो ये सब सीख मुझे वहीं से मतलब मिली है। और अभी मैं जितना डेप्थ में जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, जैसे अभी आई लव रीडिंग, so reading different kind of books, like I just mentioned, and got to know more of how this practice comes from the Indian philosophy, or Hindu philosophy, Indian philosophy, however you want to term it. And it is so nice to just see that I was put into a place in the temple very unnaturally and very naturally and very organically, बिकॉज माई इंटेंट, मैं तो 6 महीने का वीज़ा ही लेकर गया था ना, तो मैं 5 साल रहकर आ गया। तो ये सब प्रयास, ये सब तपस्या इतना करके आया, पर्पस मिला, एंड आई हैव मर्ज द प्रैक्टिस एंड द पैशन ऑफ फिल्म मेकिंग, फिल्म्स, एक्टिंग, परफॉर्मिंग with my Shaolin discipline, mindset, lifestyle which is there, and that's what I'm right now doing in my life, and I'm an actor, so yeah. तो भाई जैसे आपने शाओलिन वॉरियर मॉन्क की ट्रेनिंग की, देन यू गॉट इनटू डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एंड चाइनीज कल्चर, देन यू रेड देयर फिलोसफी, वहाँ से आप इंडियन फिलोसफी में आए, आपने महाभारत और भगवद गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया है, यू आर रीडिंग अदर बुक्स ऑल्सो, एंड यू आर गेटिंग इनटू अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल आर्ट्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें आपको आपकी एक्टिंग में कैसे सपोर्ट करती हैं? I'm just started acting, so just very new to it. But I've been around on set because of my family coming from the industry, and I've seen things, I have observed things, and of course, after being matured, post the age of 18, 20, living as a monk, and बोलते ना कि 5 साल रेनाउंस कर दी थी चीज़ें, एक साधु की ज़िंदगी जी रहा था मैं, और फिर सडनली कमिंग बैक टू द टेम्पल, सडनली कमिंग बैक टू द सिटी आफ्टर लिविंग इन द टेम्पल, सो जस्ट कम्प्लीटली अडेप्टिंग टू दैट लाइफ स्टाइल। एंड आई पर्सनली फील एक स्टूडेंट को, डजेंट मैटर इफ इट्स अ शाओलिन वॉरियर मॉन्क और एनीथिंग, आई थिंक एक ऑनेस्ट स्टूडेंट को अपने रूट्स से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी रहना चाहिए, एंड बोलते हैं ना अपने जड़ों से जुड़े रहो। सो आई फील दैट माई प्रिंसिपल्स एंड माई डिसिप्लिन ऑफ शाओलिन आर सो रूटेड within me, inside of me, that any art that I venture into now, since I'm pursuing acting as my primary profession, it keeps me very it keeps me the same. It's just that the way of expressing things and the practice part of it is of acting is different. But yeah, I think it's a beautiful balance that I have of two different extreme lifestyles of an actor and a monk, and that's where I find my center. And I personally look up to Master Bruce Lee, who has actually given that light to me, or I would say that direction where I can also heading in that direction the way he has. At least I'm trying my bit, but have my own style, have my own product in the end, because I'm a huge Dilip Kumar Saab fan, and I love his story, I love his acting, I really look up to him. So yeah, just it gives me a sense of balance. I feel there is no कोई मुझे ऐसे एक तरफ ज़्यादा नहीं खींच रहा है, कोई एक तरफ कम नहीं खींच रहा है, मुझे एक प्रॉपर एक बैलेंस मिल गया, और मैं अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करता हूँ यार। इट्स वेरी सिंपल। आई फील भाई आप जो कर रहे हो या आप जो लेवल पे चीज़ों को कर रहे हो, देर आर ओनली टू पीपल हु आर डूइंग इट इन इंडस्ट्री। एक है विद्युत जम्वाल और एक है टाइगर श्रॉफ। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार सर ने इस ट्रेंड को लाया है, मार्शल आर्ट्स के ट्रेंड को लाया है, बट जिस लेवल पे आप चीज़ों को कर रहे हो परस्यू, वो आई गेस ये दो ही लोग हैं जो अभी इंडस्ट्री में कर रहे हैं इस लेवल पे परस्यू। करेक्ट। I look up to both of them, of course. विद्युत जामवाल में तो विद्युत भैया बोलता हूँ, and Tiger, of course, in fact he has invited me a couple of times to train along with him and his team, so he's a friend. But they both are good at what they are doing and how much they've done. I don't know मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, उन्होंने कितना टाइम दिया उनके प्रैक्टिस को और कौन से आर्ट परस्यू कर रहे हैं। I've never gotten into the detailed study, but whatever looks good on camera, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। So जो भी है, it's very beautiful, and I've practiced with Tiger. He's very hardworking, very dedicated to what he does. How I feel is that
my style and my approach is very different. It's very Chinese. It's very Jackie Chan, Jet Li types, and Jackie Chan is obviously everybody's guru. All people look up to him. I feel I have something different, new to offer because of the commitment and the routineness that I have given to the practice of Shaolin. So I feel that I definitely have something new which I'm going to be bringing on screen because that practice is very real. No? And to mold me and adapt me and make it look beautiful for the camera becomes very easy rather than me just continuously practicing the choreographed moves. So I think that would set me apart. And I practice every day. एंड वही है जो मैं रियल है वही प्रैक्टिस करता हूँ और जो स्क्रीन पे दिखाना है तो उसको प्रॉब्ली मुझे कंट्रोल वे में करना पड़ेगा, स्लो वे में करना पड़ेगा या according to the action director's direction, I'll have to do certain style and express and make it look beautiful. So I think it'll be very easy for me because like I said, I've done these things in real what people see, so it becomes like a cakewalk for me, no? But obviously there's a lot of hard work and coordination with the whole team which is on the set, with your co-actor, with your stunt boys and stunt girls, with your action directors, your directors, the camera. So there's a whole crew which everybody is putting in so much hard work and effort to make it look beautiful. So I'm just waiting for the right opportunity, and next year everybody will see me. Oh, okay. Will they be able to see you? Yeah, of course. Why not? Worked on a good film and working on a really good film. So very, very soon, yeah, we'll start shooting, and then next year we're looking at it to be on screen. So yeah. आप जो बता रहे थे भाई कि ऑन सेट जो फाइट कोरियोग्राफी होती है और रियल फाइट ट्रेनिंग जो होती है इसमें फ़र्क होता है, तो हाउ इजी इट वाज फॉर यू जब आप सेट पर गए और आपने वो कोरियोग्राफी को अडैप्ट किया? सो मैं जब बॉम्बे आया था 2020 जैन में, चाइना से अमेरिका शिफ्ट हुआ, अमेरिका से फिर बॉम्बे शिफ्ट हुआ, तो मुझे विकी कौशल जो है वेरी फेमस एक्टर, विकी इज़ लाइक अ फैमिली, लाइक अ ब्रदर टू मी. सो विकीज़ डैड श्याम कौशल, ही इज़ अ वेरी फेमस एक्शन डायरेक्टर. श्याम अंकल ने मुझे मेरे वीडियोस देखे और मुझे इनवाइट किया था साउथ इंडिया में. तेलुगु मूवी की शूटिंग चल रही थी पवन कल्याण की, तो वहाँ पर इनवाइट किया था मुझे टू डिज़ाइन सर्टन स्टंट्स बिकॉज ही गॉट वेरी हैप्पी दैट आई एम शोइंग दीज मूव्स. एंड देन पवन कल्याण सर से शेयर किया, डायरेक्टर सर से शेयर किया. So they liked that moves and they invited me to Hyderabad. He's like, Puttar, tu aaja. So I went to Hyderabad and I was working with Pawan Kalyan sir. So I that time didn't know much about how my approach needs to be towards acting because everybody in the family is more on the technical front, but I wanted to break the stereotype. I wanted to come and be placed and still want to come and be placed in a space which nobody has been because of all the practice I've done so far, as a Shaolin monk and then with Jackie Chan team and theater and this and that. तो पवन सर के साथ मेरा रैपो बना and I showed him moves, I designed moves and श्याम अंकल ने मुझे स्पीयर दे दिया. अब बोले कि अच्छा 10 फाइटर तेरे पे आएंगे, फाइट करेंगे स्टंट बॉयज और तू मार उनको अपने स्टाइल से. तो मैं बोला ठीक है, no problem. Like I didn't have to think too much because I just needed to know who's coming first, second, third, fourth, fifth, sixth. इतना मुझे ध्यान में रखने का. I knew I would just go very naturally with my body's instinct what I need to do. And then he would tell me that अच्छा मुझे ये मूव चाहिए, ये मूव चाहिए, ये मूव चाहिए, इसको तू एक डिज़ाइन करके मुझे दे. So ये सब मेरा एक इंडिया में मेरा एक बोलते हैं ना एक इंट्रोडक्शन हुआ. So but that's when I realized I was like यार I want to act, and why am I getting in the same technical field which I didn't want to do that. So I had a word with Pawan Kalyan sir and I told him and expressed my desire to him. उनको मैंने कहा कि सर मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ, and he's like, अरे why didn't you tell me before, and we'll see if we can find a part for you in this film and everything. तो उस हिसाब से फिर तेलुगु फिल्म में मुझे पार्ट मिला and एक्टिंग का जो भी एक रोल मिला टेस्ट वेस्ट करके. एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड यार to be on set and doing these beautiful movements that I've done in reality
it's so much fun. It's something, you know, when you're free flowing in nature, when you're just like enjoying, बोलते हैं ना कि डांस वाले कैसे एंजॉय करते हैं, सिंगिंग वाले कैसे एंजॉय करते हैं, तो व्हेन आई एम डूइंग माई एक्शन आई एम जस्ट एंजॉइंग, आई एम जस्ट लविंग व्हाट आई एम डूइंग. सो मेरे लिए काफ़ी लाइक, यू नो, it became very natural. It became very like easy going for me. Second nature. Yeah, it became like an innate part of my being that okay, you know, I've practiced so much, I've studied so much. मैं जब जैकी चैन टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, so I got to study more of the cinema fighting, cinema martial arts का एक proper course होता है, you know, for in Hollywood. तो वो मुझे सीखने मिला, वो मुझे study करने मिला, and yeah, and I think what I've studied, you know, in reality about, you know, martial arts, Shaolin, and other arts that I'm also still studying, it's something which is going to be new for people to see and check it out because it's not explored यार. आई फील जो फ्यूजन आप ला रहे हैं स्क्रीन पर एक मार्शल आर्टिस्ट का और एक एक्टर का, अगेन वो किया तो बहुत लोगों ने, जो फॉर्म्स आप ला रहे हैं वो बहुत ही न्यू रहेंगे मुझे लगता है. और भाई एज एन एक्टर आपने कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया है अभी? यस ऑफ कोर्स. मैं जब अमेरिका में भी था तो मैं फिल्म स्कूल गया था, मैं थिएटर स्कूल गया था, पर यहाँ पर भी मैंने थिएटर किया है काफ़ी टीचर्स के साथ. सौरभ सचदेवा सर है, रचित सर के साथ मैं अभी एक्टिंग कोर्स, अभी उन मेरे कोच हैं. तो आई हैव थॉरली परस्यूड, यू नो, फोकसिंग ऑन द क्राफ्ट. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्शन करता तो सिर्फ एक्शन करता रहूँगा. आई डोंट वांट टू जस्ट बी focusing and catering to one genre. I think an actor is supposed to be very diverse, and they're supposed to cater to everything, every genre. And I feel that it's important to know, because it's called acting. You're an actor, so you need to know how to act, how to convince people, how to make it look real and feel real for people to be empathetic towards you, right? So I focused on you know, acting thoroughly. I'm still, of course, go for workshops, keep on doing riyaz, and I'm trying my level best for my acting art to reach to the level of you know, my martial art level, but there's still a long way to go, of course. Yeah, I'm a trained actor. I'm properly studied acting in theatre schools. तो भाई आप अपने एक्टिंग करियर और फ्यूचर को लेके कितने एक्साइटेड हो? I'm very excited. Probably 5% nervous, 10% nervous. लेकिन I feel very confident. I feel very yeah, I just feel extremely confident, and I feel I'm excited to like just perform, you know, because I love expressing. Because I feel जितने भी arts है, जितनी भी कलाएं हैं वहाँ पे, यहाँ पर हम जो देखते हैं, dancing, singing, acting as performing arts, any performing art is dance of expression. So you know, an artist gets a lot of happiness and pleasure out of just expressing and, you know, connecting with people, because your body might be doing the work, but your soul is doing the talking and connection with the people. So I'm very excited to do that with the skill set of Shaolin, with the skill set of acting, with the skill set of anything that's going to be required for me as an actor to show. So yeah, I'm looking forward to it. It's going to be fun, and I just want to keep on learning along the way with a lot of people who I'll be working with, who I'm working with. And yeah, keep on inspiring people. Yeah, just yeah, that's all. As far as I have read about acting भाई, मुझे लगता है कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग, आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल जर्नी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक्टिंग परस्यू करने में भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर भी यू नीड टू बी स्पिरिचुअली वेरी अवेयर एंड मेंटली वेरी स्टेबल टू परफॉर्म वेल इन द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग. I agree. I feel that एक होता है अपना IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, और एक होता है EQ, इमोशनल कोशेंट, और एक होता है SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट. तो ये तीनों कोशेंट्स को एट पार रख के ही कुछ भी परस्यू करना चाहिए आई थिंक लाइफ में. तो इसकी तीनों को प्रैक्टिस ना बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली आपको करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट ऑल थ्री स्टे एट द सेम लेवल. तो थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारे इमोशंस में ऊपर नीचे, हमारी जो एनवायरनमेंट में जो लोग हैं या सिचुएशन है उसमें भी ऊपर नीचे हो जाती है. एंड आई फील द मेन थिंग इज़ जस्ट प्रैक्टिसिंग ब्रेथ वर्क. एवरीथिंग इज़ योर ब्रीदिंग. हर एक जो भी चीज़ है प्राण की शक्ति है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स भाई जो मुझे आपसे और पूछना है और बात करना है, पर ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी जो किया है इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 होने वाले हैं. डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर से इनवाइट करूंगा. बहुत सारे टॉपिक से जो बात करना है,
और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट रिलीज होने के बाद ही हम लोग आपको इनवाइट करेंगे, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो. No, definitely. I'll be happy to be back over here. Yeah, and thank you for having me here, Arjun, and with great team. Everybody's amazing, for the hospitality. So hopefully, yeah, we'll connect again, and I hope the viewers enjoy what I've shared. But the last thing I just want to say is that I get this question a lot. जो आप मेरे को पूछे थे, I think, which is very important to share, is what was my biggest lesson that I had when I got when I was living in China in Shaolin Temple. I think people really forget. My biggest lesson was to listen. So listening is so important. I feel it's so undervalued and underrated. And that was my biggest take back. I just don't want to extend it, but just make sure you listen well, because when you listen, you learn. So, yeah. Thank you. Thank you so much, bhai. Thank you Thank so you, much thank for you, so thank you much so of much, brother. information. Thank you, thank you, thank you for visiting. Amitofa.